Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, thank you very much for joining me today's session. Officially, today is the first lecture of the graphic design and fashion design. And walaikum assalam. Thank you very much. Fashion and interior design se mutalik. This is the first lecture which we are going to start today. So, before I start, my name is Hameed sir. I'm the freelance entrepreneur and educational and technology consultant. And here are my credentials. You can contact me through WhatsApp, through my Gmails. You can contact me through my website, and you can join me on YouTube as well. My hashtag address, my uh, multiple addresses, which are all have been there. So I'm actually waiting for Zainal and because she was having some problem yesterday. So अगर आज भी किसी को Zain, are you there? Zain, she logged in and she is still having some problem with his mic. I don't know whether she can hear me or not. Zain, please confirm in the chat box. Can you hear me properly today? Okay, I think she is still busy in something. Anyway, so let's get started. Okay, perfect. Thanks a lot. Thank you very much. Okay, G. So, fashion designing is the our subject today. Dear students, before I move forward, I just want to give you a small history of the fashion design. Fashion design and interior design, दोनों के दोनों topics उस time से they are with us till जब से human being are there, right? So that is the history. कोई specific जगह, कोई specific ऐसी एरिया नहीं है जहाँ पे जाके आप इसका कोई बैक एंड या इसका इनिशियल स्टडीज या इनिशियल स्टार्ट इसका देख सकें या पढ़ सकें. सो जब से ह्यूमन बीइंग है उस टाइम से ये फैशन एंड इंटीरियर बोथ डिजाइनिंग दिस एंड द रीजन इज बिकॉज ह्यूमन बीइंग के साथ साथ ये सारी की सारी चीज़ें इवॉल्व होती हैं. जिस जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग इवॉल्व होते रहे उसी तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें ह्यूमन के साथ साथ इवॉल्व होती. क्योंकि अल्लाह ताला ने ये ब्रेन और ये सेंस तमाम लोगों को दी थी उस वक्त भी जब लोग caves में रहते थे. When they used to live in the caves, at even at that time, if you go through any of the old videos, you will find out that in the caves they used to draw certain things on inside the caves, and those are actually, you can just Google it and you can find out there are multiple things जिनके थ्रू जाके आपको ये पता लगेगा कि they used to draw the things, they used to draw certain things, and दिस इज अक्रॉस द ग्लोब. पूरे सर्कल का ग्लोब का चक्कर लगाएं. जहाँ जहाँ पे अल्लाह ताला ने इंसान को पहुंचा दिया वहाँ वहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें. फैशन मीन्स के क्लॉथिंग्स एंड इंटीरियर मीन्स के इन क्लॉथिंग्स के अलावा जहाँ पे इंसान ने रहना सीखा. ये दो जगह ऐसी थी जिससे एक्चुअली इस सारे इस टॉपिक की इब्तिदा है. दैट्स द फर्स्ट इनिशियल startup. And further is, if you come into in our specific region, हमारे इंडो पाक में especially, if you remember or if you go through the ancient जो हमारा history है उसमें थोड़ा सा आप जाएं, you will find out there are so many जो previous हमारे rulers थे, like kings थे in the India, जो के like बादशाह जिन्हें हम लोग कहते थे, they used to wear different type of fashion design clothes, और वो सारे के सारे different type of wear ups वो सारे wear करते थे, and सारी दुनिया में they were renowned as they used to wear jewelry, they used to wear turbines, and they used to wear different type of multi colors के किस्म के वेयर अप्स वो सारे के सारे करते थे. सो उसका एडवांटेज क्या होता था? उसका एडवांटेज ये था कि ह्यूमन बीइंग में ये सारे कलर्स, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स, और ये सारे के सारे आपकी पार्ट ऑफ लाइफ बनते हैं. एंड दैट्स हाउ दिस होल फैशन डिजाइन इंडस्ट्री यहीं से एक्चुअली इसके स्टार्ट हुआ. सो आई जस्ट डू नॉट वांट टू गो इनटू द ब्रीफ. वैसे इफ यू गो फॉर द हायर स्टडीज इनटू द फैशन डिजाइन, इसके लिए इसके लिए अगर आप थोड़ा सा अगर आप हिस्ट्री में जाना चाहें तो, या अगर आप इसकी स्टडीज को थोड़ा सा गो थ्रू करना चाहें, यू विल फाइंड आउट के देयर आर
at least 1 year initial is basically about the history of these two topics, fashion design and the interior design. So, lekin as we do not have that much specific time, so I initially thought that instead of going for the complete course as in history, we should give it at least 10 to 15 minutes so that कि हमें हमारे पास at least basic knowledge इसका जरूर हो. So let's move to our recent past. आजकल के topic पे चलते हैं. Is there anyone who can just guess what exactly this stands for? Is there anyone who can just tell me in the chat box what does this stands for? Or even you are allowed to unmute yourself. It's a brand. Very good, Aswat Khan. Very well done. It's a brand. Absolutely. And what else? Name of a brand. Absolutely. What does this stands for? इससे पहले कि आप गूगल कर लें, I just do not want. Yes, absolutely, Rubab. You are very much closer to. Varisha Zia, you have almost there. लेकिन आपने आधा जवाब दिया. HSY. इससे पहले कि आप लोग सारे के सारे गूगल कर लें. So let me tell you the story. That is Hassan Shahryar. Yes, Hassan Shahryar. आगे. ओके, इससे पहले कि आप लोग सारे के सारे गूगल कर लें, यासीन. एब्सोल्युटली आयशा ताहिर, आपने गूगल करके और उसको फौरन से कॉपी पेस्ट करके यू पेस्टेड हियर, एंड दैट्स व्हाट आई वांट. इंटेलिजेंट. आई लाइक इट, एंड आई वांट कि मेरे सारे के सारे स्टूडेंट्स इस टेक्नोलॉजिकल चीज़ों को का स्पेशली एडवांटेज उठाएं. दिस इज नॉट मेंट फॉर स्पेसिफिकली फॉर मी. Is his full name. Absolutely correct. Hassan Shahryar Yassin. He is the Pakistan #1 fashion designer. And in this start, I just thought कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा preamble इसलिए दे दूँ because it's a very interesting story of this Hassan Shahryar की. So that's a very important for you to understand. So before I start, this is Hassan Shahryar Yassin. By the way, in the center also, and the here it is also. And by the way, अभी थोड़ी सी मैं ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन आपसे करवा दूंगा, बट आई वुड लाइक कि मैं थोड़ा सा इनके मुतालिक फॉर नॉट मोर देन 2 or 3 minutes थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं. ही इज बेसिकली फ्रॉम, चलो लेट मी स्टार्ट विद द कंप्लीट स्लाइड. टॉप फैशन डिजाइनर्स फ्रॉम पाकिस्तान, दैट इज बाय द वे हमारा आज का टॉपिक है. और उस पर क्योंकि #1 इज अगेन HSY, सो आई जस्ट थॉट कि इंस्टेड कि जी मैं दोबारा से हसन यार की पूरी स्टोरी आपसे शेयर करूं, इट्स बेटर कि मैं पहले उस स्लाइड पे जाता हूँ और उसके बाद आपसे शेयर करता हूँ. सो बाय द वे, हसन शहरियार यासीन, दिस इज हिज ब्रांड HSY. एंड एक्चुअली इसने कहाँ से स्टार्ट किया? इसने भी स्टार्ट बिल्कुल ऐसे ही किया बिकॉज ही वाज फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम द पॉलिटिकल बैकग्राउंड. His father was from the politics, his mother was from the Karachi. He was born in Karachi and basically वैसे सेटअप इनका लाहौर में भी है. And he has awarded different जो लक्स स्टाइल के अवार्ड्स हैं, इस तरह के different awards he has won. And by the way, he was about 16, 17 years old when unfortunately due to one incident he got blind. ये बिल्कुल इनकी नज़र चली गई for 2.5 years. And during this whole period of time, as he was from a very good माशाल्लाह background family, बहुत ही अच्छी family से background था, तो they actually tried कि इनका अच्छे तरीके से इलाज हो, and that's how they reached to a very good hospital, and वहाँ से इनका इलाज शुरू हुआ. But that took them at least 2.5 years to reach that stage. And during that 2.5 years, he find out that the life without the colors is nothing. And at that time he realized कि जो इंसान कलर्स और कलर्स के साथ प्ले करता है, that is the real life or the real meaning of his life. So जब इनकी आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने इस शख्स को इसकी नज़र वापस करना शुरू की, the first thing he saw was the colors. जो क्योंकि ज़ाहिर जो इंसान ने वेयर अप किया होता है, that is the most visible thing on his body. So automatically जो बंदा इसके सामने आता था, he used to see them first, and that's the first time he realized कि अल्लाह ताला की ये दी हुई नेमत जो कि आप कलर्स की शेप में आप वेयर अप करते हैं, that is the best thing. So from there actually he started up this brand. He take this approval from his mother कि आप मुझे इजाज़त दें that I should start
rather going towards the politics, I should start my own brand and something like कुछ fashion से related, कुछ इससे related. So his parent allowed him, and that's how actually he gets started. And करते 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 आज वो इस stage पे पहुंच गए कि he is uh, uh, in the world, he is known as number one fashion designer of Pakistan. And mashallah, it's a great story of this man. Great story of this man. जितना एडमायर आप कर सकते हैं आपको करना चाहिए. ठीक है ना. सो मेरा ये इनिशियल वाला आज का जो सेशन था, दैट वाज इंटेंशनली मेंट फॉर दीज काइंड ऑफ पर्संस जो पाकिस्तान से हैं, जिन्होंने ये सारा कुछ इस प्रोसेस में से गुजरे, जिस जो प्रोसेस आप आज स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो इट्स बेटर के हम उनको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उन लोगों को रिवॉर्ड दें जिन्होंने आपके लिए एक वे आउट बनाया, आपके लिए एक रास्ता बना दिया कि अगर आप लोग इनसे सीख कर कुछ करना चाहें तो दीज आर द पर्सनालिटीज फ्रॉम पाकिस्तान ओनली. आज का सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव सेशन इज ओनली फॉर द पाकिस्तानीज. And by the way, this is Hassan Shahryar. The second is Mr. Deepak Parwani, is a very renowned fashion designer and a very old fashion designer. And he is about 60 years old right now. And deepakparwani.com is his website. And by the way, the most important thing जो कि मैंने आप लोगों के लिए सबके साथ रखी, हसन शहरियार यासीन के साथ, look at this, HSY, and there is a logo. Deepak Parwani, and that's his brand, that is DPP. D stands for D, and P stands for Pak, Deepak, and the next last P is for Parwani, Deepak Parwani. And he is also known as the top fashion designer of Pakistan and won different awards of the fashion designing and Lifestyle Awards may or different इस तरह के television shows में you can find out. And deepakprawani.com is his website. The third number पे that's Zeenab Chutani, that is ZC, and zeenabchutani.com is again her website. And by the way, she is also a renowned lady fashion designer of Pakistan, and she is from Karachi. And you can just go through their website. And by the way, ये तीनों brands, ये तीनों renowned fashion designers जो कि पाकिस्तान से हैं, they are known in the world by the way. ठीक है ना. सो ये क्रेडिट बहुत बड़े ऑनर की बात है पाकिस्तान के लिए कि दे आर द वन जो अपने डिजाइन्स को और अपने ब्रांड्स को आउटसाइड पाकिस्तान लेके जाते हैं and earns a very big name on for Pakistan, that this is something which they can do. Nadia Hussain is NH, that's her brand. Nadia Hussain is a Pakistani television actress, is a host, model and entrepreneur and the fashion designer. ये different dramas में भी उन्होंने काम किया and basically from Karachi. And Atif Khan, शायद most probably अगर आपको नहीं आइडिया तो you can find out his spouse and details. And by the way, NH, and you can go through Nadia Hussain's website also. I don't know what exactly is the website address of this, लेकिन she has a website also. And by the way, she operate करती है कराची से, and that's NH is her brand name. So Kimar Rokhani, KK, the house of Kamyar Rokhani, Rogni, something like this. He is also from, he is from Punjab, by the way, from Bahawalpur. And by the way, his business is all in Karachi. And is a very renowned name, again, a Pakistani fashion designer. और बहुत पुराने fashion designer हैं. And luckily, he is exactly of my age. Almost October 15th is my almost birthday, so इनका भी exactly यही है. That's why I known this personality very well. Anyway, the Safina Naz Munir and Sana Safinas के नाम से you can find out this brand around in Pakistan anywhere. So that is the most important thing. जो कि पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर्स थे, आई जस्ट थॉट कि मैं आप लोगों के साथ ये सारे के सारे जो एटलीस्ट पाकिस्तान के लिए जिन्होंने काम किया, दो के अपने ब्रांड्स के लिए काम किया, लेकिन दे आर फ्रॉम पाकिस्तान और इट्स पाकिस्तान के फ्लैग को इस नंबर पर लेके गए. मे बी शायद, लेकिन शी इज अ रिनाउंड fashion designer also. She has done multiple projects.
Yes, absolutely. She is a model also. She is a designer also, and his husband is also a designer. लेकिन the the subject is not this कि हम इसके ऊपर yes exactly she is a designer also. So the idea is not this कि इसके ऊपर हम discussion शुरू कर दें कि she is just an actor और वो नहीं है वो नहीं है. The idea is कि she is a fashion designer. She is a very renowned fashion designer. और अपनी चाहे क्लॉथिंग के लिए उन्होंने काम किया या चाहे किसी के लिए भी काम किया, she has worked for different brands, and that's how she came up with NH, that is Nadia Hussain, with his name. So anyway, you can agree or with agree. I must say कि instead of this आप इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रीलांसिंग विल डू इज कि ये तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो इस बात को नेगेट कर रहे हैं, माय एम एंड ऑब्जेक्टिव इज कि आप लोगों के फैशन डिजाइनर्स, आप लोगों के नाम सब के सब को यहाँ पे लेके आए. That's what my aim is, right? So that's why it is very important for you to brainstorm today कि आप लोगों ने कैसे अपने अपने ब्रांड्स के ऊपर, कल जहां पे हमने खत्म किया था ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द क्लास, आज दोबारा हम वहां से जाके शुरू करेंगे. एंड that is the most important thing. I will explain you different after today's this session. ये मैं session भी upload भी कर दूंगा, and the previous sessions जो इससे related हुए for the logo development, for the logo making, वो भी आपसे share कर दूंगा. So if you have the expertise in the Photoshop or in any other graphic tool, what you can do is you can come up, you can create your own fashion design brands, right? So that is very very important, so that कि हम जब फोटोशॉप में डिफरेंट चीजें बनाएंगे, डिफरेंट क्लॉथिंग्स बनाएंगे, फॉर एग्जांपल किड्स क्लॉथ्स बनाएंगे, फीमेल डिजाइन्स बनाएंगे, एट दैट टाइम जो आपके अपने अपने ब्रांड्स एंड लोगोज है, दैट हैज टू बी प्लेस्ड ऑन ऑल दोस क्लॉथ्स. So that is why it is very very important for you to create this first in the first instant, right? So okay, so coming back to the Varisha Zia sir, I want to start my own work, just dupattas. Excellent. Dekho, that is what my aim is, right? So let me unmute again to all of you, so that के आप अभी अभी से जिस तरह हमने लास्ट अपना सेशन यहाँ पे खत्म किया था, who was actually discussing this whole thing. One was the Asfan, there was another I don't know कौन था. Ma'am Javeria is today with us, mashallah, from all the way from Abu Dhabi, and Mahnur Rizwan is there, and excellent. Yes, that's excellent. I would request कि जिन जिन के पास अभी से ideas है ना, they should they should join me. They should come up and discuss that thing with me, so that कि हम within 1-2 lines में उनको finish करते जाएं. Minahil, I want you to start first. Unmute yourself. Minahil, yeah, Manahil. Can you please unmute yourself? No, you are. Yes, please. Asfan, can you please Yes, join sir. me? Assalamu alaikum, sir. Yes, walaikum Yes, assalam. sir. Okay, Manahil का शायद mic issue है, इसलिए she might not be able to speak. अच्छा, Aswan, the idea, Rubab, again, thank you very much for joining. I would request Azra, you also to unmute yourself, and then उसके बाद मैम जवेरिया and Mahnur Rizwan, and आप सारे के सारे अपने आप को unmute करें. I want you कि आपके अंदर जो फैशन डिजाइनर या वो सारा जो जो छुपा बैठा है ना, उसको थोड़ा सा हलाएं आज, उसको जगाएं आज कि यस, आज से हमने प्रैक्टिकली वो काम स्टार्ट करने हैं जो ये सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर्स करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद असवंत खान फर्स्ट. असवंत, व्हाट्स योर आइडिया मैन? Yes, सर. माय आइडिया इज, सर, मैंने जितनी मार्केट वगैरह देखी है ना, उससे मैंने ये एनालाइज किया, आप एक अगर आप जैसे रहे ना फीमेल क्लॉथिंग पे रहे या मेल क्लॉथिंग में, आप कामयाब नहीं हो सकते. ओके, तो आपका मतलब बेसिकली एम ये होना चाहिए कि आपका मल्टी डाइवर्स किस्म का होना चाहिए क्लोथिंग लाइन. लाइक आप चिल्ड्रन को भी आप उसमें अकोमोडेट करें, ओके, मेल क्लोथिंग को भी आप उसमें करें, फीमेल क्लोथिंग, और साथ उसके एक्सेसरीज वगैरह भी आप उनको प्रोवाइड करें, ताकि आपकी मार्केट के जो बेसिकली जो है ना ओके, बेस, वो थोड़ी तरह बढ़े. excellent. Hold on a minute here. I would like to ask one question. That's a very good introduction.
आप मेरे से क्वेश्चन करेंगे और मैं काउंटर क्वेश्चन आपसे करूंगा. द एडवांटेज वुड बी कि जितने हमारे लिसनर्स हैं फैशन डिजाइन क्लास के, वो सारे के सारे उससे एडवांटेज उठाएंगे. करेक्ट. सो दैट्स हाउ दिस वुड बी अ काइंड ऑफ इंटरैक्टिव सेशन. The idea is not just कि मैं यस सर. बोलता रहूं और बोलने के बाद खत्म कर दूं और उसके बाद खुदा हाफिज हो जाए. नो, नॉट एट ऑल. आई वांट यू टू स्पीक अप. अच्छा जी, Asfand, what do you think? How much does it cost you to start as a full-fledged brand? Sir, it depends like from where you want to start. Okay, If you want to start like from a like local level, then it doesn't cost that much. Like तकरीबन 50 to 60 lakhs तकरीबन अगर आप लोकल लेवल पे स्टार्ट करें, लाइक अपने शहर में, जैसे आप टेक्सला में, पिंडी में अगर आप okay, स्टार्ट करें, okay. और इसी तरह अगर आप अपने उसमें प्रोविंस में आ जाए, लाइक अगर आप पंजाब में शुरू करना चाहते हैं, फिर सर काफी मतलब महंगा हो जाता है काम, क्योंकि 100%, my आपने dear. उसके लिए शॉप्स भी आपने. Yes, my dear. यस सर. My dear, देखो, that's why I just started up the lean thing. Lean startup means कि आपने जो minute छोटे से छोटा लेवल हो सकता है ना, स्टार्ट हमने करना है वहां जी से. सर. एंड वो कैसे करना यस है? सर. वो कैसे ऐसे करना है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो विदाउट पुटिंग अप एनी कॉस्ट जो आप काम कर सकते हैं, दैट कम अप विद योर ब्रांड फर्स्ट. सो असफन, व्हाट एग्जैक्टली यस सर. वुड बी द नेम ऑफ योर ब्रांड? Sir, the name of my brand would be AK. AK, परफेक्ट. दैट्स वेरी गुड. Yes, AK sir. 47 ना कर देना बस. AK तक ठीक है. Good, good, excellent. So AK would be dealing in all the accessories, correct? Correct? Yes, sir. Excellent. Correct, So very इस correct. टॉपिक के ऊपर हम दोबारा आएंगे. I just do not want कि मैं सबको डी ट्रैक करूं यहाँ पे. There is a lot of questions जो कि आपके और मेरे दरमियान होने हैं, वो इंशाल्लाह वो इंटरेक्शन हमारा चलता रहेगा. करेक्ट? जी सर, ठीक हो जाएगा Okay, बिल्कुल. Zan, can you please unmute yourself? Go ahead. You're already unmuted. Okay. Yes, speak up, Zan. Okay, sir. I would like to agree with Afsan Khan that he Okay. said कि हमें एक चीज पे नहीं रहना चाहिए, like हमें kids का भी Very करना right. चाहिए, हर Very right. domain को follow करना चाहिए. No, But excellent. as That's a we very right idea. But yeah, again, is ताकि straight हम हर away किस्म की audience को target कर सकें. 100% right. But Zain, listen me first. What exactly Yeah. is your brand name first? That is something मैं So, recognize इससे करूँगा आपको. सर गुले यास, मैंने जो अपनी ब्रांड का नाम सोचा है वो गुले यास है, और एक्चुअली मैंने तो वो लॉन्च भी कर ही दी है. Beautiful. इंस्टा पे पेज बना लिया है, फेसबुक पे बना लिया Excellent. है, बट ये Excellent. है कि काम थोड़े शुरू Excellent. कर एक दिए. काम ये करना है, एक काम आपने ये करना है कि वो फेसबुक का वो पेज और वो उसका ग्रुप का जी लिंक आपने यहाँ हमारे पास चैट बॉक्स में सबके लिए या अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करना है, सो दैट कि हम श्योर. आपके एक्सपीरियंस से फायदा उठा सकें. एंड दैट वुड बी अ ठीक ग्रेट थिंग, ग्रेट शेयरिंग टू ऑल ऑफ दोस्त जो जो अपना ब्रांड स्टार्ट करने जा रहे हैं. करेक्ट? सर, मैंने ये स्ट्रेटेजी निकाली थी कि पहले मैं थोड़ी सी क्या कहते हैं, लोगों को बताऊं कि मैंने ब्रांड स्टार्ट कर दिया है, पेज वगैरह बना के फैंस कलेक्ट किए हैं कुछ, उसके बाद मैंने कहा ओके. कि कुछ फैंस कलेक्ट हो जाए, उसके बाद मैं अपनी प्रोडक्ट लॉन्च Excellent. करूं. Very तो good. अभी Excellent. मैं अपने देखो, ये लॉन्च करने as far as the cost of your project is concerned, इस topic के ऊपर हम बाद में आएंगे. Okay? We ओके. are not यस right सर. now not discussing that thing. Okay, Rubab Zahra, ओके. can you please join me in the session? Rubab. Rubab is, I think she has unmute to her, but she is not listening. Farah Saeed is in the scholar type personality, mashallah. I'll ask her to at the बिल्कुल last पे हम उनसे फायदा उठाएंगे. Miss Javeria, can you hear me? Yes, sir, I can hear you. Assalamu alaikum. Walaikum Everyone. assalam. Thank you very much for joining me all the way from Abu Dhabi. And Thank you. let me introduce Miss Javeria. She is from my previous graphic design class, and I assume and I think that she is quite satisfied with our previous class. That's why she has joined us in the fashion design class. Yes, sir. Alhamdulillah. Excellent, excellent. So, Ma'am Javeria, what's your thoughts? You are moving to in December. You are moving to where? Where? I just lost. Atlanta, Maybe I will be moving to Georgia, which Georgia. is near Turkey. Yes. Okay, Georgia. So, Yeah. do you think is it a good idea कि आप उससे पहले ही अपना कुछ branding work, कुछ maybe something कुछ small सा setup start कर दें? जी सर, इसीलिए मैं कोर्स ले रही हूँ ताकि मैं थोड़ा बहुत कुछ अपना मुझे आइडिया हो जाए और थोड़ा सा मैं जो हूँ ना
स्टार्ट हो जाए मेरा कुछ, तो Excellent. इसीलिए मैंने ज्वाइन किया है। तो So by the way, आपने हमारा प्रीवियस सेशन क्योंकि मिस किया था, yesterday वाला सेशन, उसमें we have discussed this thing at the end कि we are trying to come up with our own brands, ठीक है ना? So हम सारे के सारे अपना कोई ना कोई, बेशक I just not want कि हम बहुत कुछ बड़े लेवल पे स्टार्ट करें, I just want कि हम छोटा सा कोई अपना ब्रांड बनाए, so that कि वो ब्रांड should become the identity. Correct? So that's how you can succeed. उसके लिए सबसे first step is to come up with your brand. So as today is your first lecture, so I just do not want कि आप फौरन से मुझे बताएं, but think on these lines. First, what would be your brand? On, if I'm not wrong, JAV हमने last time शायद कुछ इस तरह का कुछ something like yes कुछ sir, किया था. we made it. We made something like this. Anyway, आप उस तरह से या maybe something else कुछ आप सोच सकती हैं. Must think on these lines, and उसके बाद we will keep on discussing this thing, right? So the other advantage would be कि यहाँ पे almost सब के सब students, I'm not specifically mention these 3, 4, 5, जो इनमें से line up होंगे, I want कि either individually आप अपने तौर पे करें, either आप join as a group करें, या जिस भी तरीके से आप अपना अपना बिजनेस छोटा लीन स्टार्टअप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, you are most welcome. And I wish जितना जल्दी ये बड़ा हो सके और जितना जल्दी ये सारे के सारे जो मार्केट्स के सेगमेंट्स हैं उनको कैप्चर कर सके, that is the best thing. But keep in mind that is the first thing कि it has to be a lean start. Otherwise I am not at all recommending you कि आप 2 million, 3 million, 4 million, 5 million इस business में straight away लगा दें. And Ms. Farah Saeed would be the right person. She is our economist in this class, so she can guide us on this topic. Ma'am, can you hear me? Ms. Yes, Farah. sir. Yes, excellent. So how are you today? Sir, Alhamdulillah. Excellent. So what's your thoughts? Last time आपने kids का segment, kids clothes का segment पकड़ा था, and have you thought about कि किस तरह का brand name होगा आपका? Mini minus something like. सर मैं जी सर मैंने ब्राइडल वेयर एंड फैंसी का बताया Okay, excellent, right? और मैं भी मतलब इसमें है कि मैं भी ये आइडिया है, जैसे अभी असफर ने कहा कि आप मतलब आप पास बच्चों के भी होने चाहिए फैंसी वेयर, और मेल के भी, और फिर आपके पास एक्सेसरीज लाजमी होनी चाहिए. ये आई थिंक एक प्रोजेक्ट हो जाता है. तो आई थिंक आप स्मॉल से अगर स्टार्ट करें तो फिर ये है कि आप वेयर से किड्स में आप फैंसी वेयर्स जो है ना वो मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वो जरा. Okay, I think due to some internet connectivity, we lost her. Acha ji, is there anyone who wants to participate in the class? I requested Mahnur Rizwan. She is also from my previous class. Mahnur, can you hear me? Yes, sir. Excellent. So, how are you today? Sir, I'm good. How about you? Alhamdulillah, I'm pretty fine. So, nice to have you again in the class. You are from the graphic design in previous session, I think. Yes, sir. Yes, sir. Excellent, excellent. So, Mahnur, from where you are, Islamabad? Yes, sir. I'm from Rawalpindi. Okay, okay. And I'm by profession an electrical engineer. वो तेरी है. अच्छा. ओरे माशाल्लाह. From where? Sir, I am graduated. I'm not yet graduated and undergrad from Fuji Foundation University. Mashallah, mashallah, excellent, bhai. This is amazing. Amazing. Think of it, an electrical engineer is doing a fashion design course. या हम सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो जाएंगे, या आप हमारे साथ बैठ के फैशन डिजाइनर बन जाएंगे. Inshallah, that would be an excellent. अच्छा, Manur, what's your thought about this? हमारी जो discussion चल रही थी. Yes, sir. Sir, I think I just want to do it by a part-time job like that. I want to work under someone. Like I am having a good sense of dressing, and you can say a good sense of fashion. So I want to work in someone's brand.
I want to work under. बिल्कुल ठीक है, absolutely. So what's your, by the way, what's your target audience? I mean, are you looking for some female clothings या किस तरह की आप I टाइप पे जाना चाह रहे हैं? Sir, I can work for anything. Okay, I'm good in children's बिल्कुल ठीक है, wardrobe as well, right? and females as well, and in bridal too. Yes, sir. Perfect, perfect, perfect. So inshallah, as far as these bridal dresses are concerned, इसके ऊपर हमारा Yes, sir. exclusive एक complete session होगा. इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोग ज़ाहिर है पार्ट ऑफ दिस क्लास, बीइंग पार्ट ऑफ दिस क्लास, आप लोगों से वो सारा का सारा शेयर होगा. पाकिस्तान में वो कौन कौन सी जगह हैं जहां से ये ब्राइडल ड्रेसेस आप बल्क में ले सकते हैं, और उसके बाद दूसरी ऑप्शन ये है कि बल्क में लेने के बाद अपनी चॉइस और अपने डिजाइन और अपनी चॉइसेस के हिसाब से आप कैसे उसको कस्टमाइज भी आप करवा सकते हैं. Yes, sir. Yes, sir. स्टार्टिंग फ्रॉम Exactly. कास्ट दिस से लेकर दिस एक सेगमेंट है बहुत लंबा. आई जस्ट नॉट वांट टू डिस्क्लोज राइट नाउ, बट दिस वुड बी a comprehensive one session inshallah, and during this time most probably that will be almost at the ending part pe hoga, lekin stay in touch inshallah. We will be discussing this thing also. Yes, sir. Inshallah. Thanks a Inshallah. lot, Thank you thanks a very lot. much, sir. Okay, Thank you. okay, Faraz, are you with us now? Yes, sir. Okay, perfect. So you were talking and in between we lost you. As far as this economic factor, we were talking about the lean startup. देखो, it is so easy for me to say कि जी आप आपके पास खुला पैसा है, अन्ना पैसा है, और आप बिल्कुल उसको सारे को पकड़ के और आप लगाना चाहते हैं तो बेशक लगा दें. बट लॉजिकली कोई भी दुनिया का बिजनेस इस तरह नहीं चलता. बिजनेस को चलाने के लिए दिस मस्ट हैव टू बी स्टार्ट अप विद अ वेरी बेसिक एंड स्मॉल थिंग फर्स्ट, एंड देन उसके बाद आई मस्ट से कि चाहे आप विद इन कपल ऑफ डेज आप उसके साथ ऐड ऑन कर लें, या कपल ऑफ मंथ्स या कपल ऑफ ईयर्स, अपने पाँव स्टेबल करते जाएं, देन उसके बाद साथ आगे बढ़ते जाएं. सो व्हाट डू यू थिंक मिस फरा? सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए और मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ. ओके, मतलब आपको ले मतलब अपना जो है सेटअप वो आप मतलब जितना मैं कर सकूं, एग्जैक्टली, बजाय इसके मुझे किसी से सुझाव लेना पड़े और इधर, और फिर उससे जो मैं अर्न करूंगी मैं अपने बिजनेस को 100%. एस्टेब्लिश करती चली जाऊं. वो डिपेंडेंसी वाला फैक्टर है तो जिसको आप किल करना चाह रही हैं. जी बिल्कुल. तो 100%, बस ये कि एक्सीलेंट. आप मतलब बढ़ते चले जाएं. हाँ जी. और फिर ये कि मतलब स्टार्टिंग आप चाहे आप एक मतलब चिल्ड्रन जो है आप उनकी फैंसी वेयर्स जो हैं वेरी वो राइट, आप स्टार्ट कर लें, क्योंकि वेरी आप राइट, मोस्टली देखेंगे आपको इसकी वैरायटी बहुत कम मिलती है. वेरी तो राइट. अगर स्टार्ट कर लें और इसके बाद आप ऐड करते चले जाएं, उसके बाद आप बॉयज के स्टार्ट कर लें वेरी राइट. फैंसी वेयर्स, इतनी और फिर बड़ी आप इतनी बड़ी फिर लाइन है आपके ये, पास. इतनी बड़ी लाइन है ये कि आप जितना सोचें, जितना इन्वेस्ट करें उतना कम है. ये इतनी बड़ी लाइन है किड्स वियर की. जी बिल्कुल सर. एग्जैक्टली. सो थैंक यू वेरी मच मिस फरा. इंशाल्लाह हम आपसे स्पेशली फायदा उठाते रहेंगे आपके एक्सपीरियंस का. इंशाल्लाह सर. थैंक यू. ओके, वरीशा जिया, सिमरा, सादिया अकील, निदा उमर, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. एंड सारे के सारे माशाल्लाह थीटे इंडिविजुअल्स बैठे हुए हैं. आई वांट के आप अपना अपना फीडबैक जरूर शामिल करें. आज नहीं तो कल वाले सेशन में, कल वाले सेशन में नहीं तो डे आफ्टर टुमारो वाले सेशन में, जिस दिन भी हुआ, आई वांट यू टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू हैव टू कम अप. सारी क्लास इकट्ठी चलेगी तो आप लोग भी साथ साथ चलेंगे. करेक्ट? सो दैट्स व्हाट द आइडिया इज. डियर स्टूडेंट्स, आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने इंटीरियर डेकोरेशन. निदा उमर, एक्सीलेंट, excellent, very right. Interior decoration is yet another a very very great and big field. और इसमें okay, no problem at all. Nida Umar, you can just unmute yourself. I want to speak to you. I want to speak to you because you are the one which is she is not interested in the fashion design, rather she is interested in the interior design. Well, of course, interior design is something बिल्कुल ऐसे ही जैसे फैशन डिजाइन, इसी तरह बिल्कुल इंटीरियर डिजाइन. सो वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट दैट फील्ड ऑल्सो फॉर अ न्यू स्टार्टअप, फॉर अ न्यू कमर. निदा उमर, आप कहाँ से हैं? निदा, शी इज अनएबल टू अनम्यूट. आई डोंट नो क्यों नहीं.
something wrong maybe. Okay, you can speak now. Nida Omar, I can hear you. Please go ahead. You can speak. ओके, महानूर रिजवान आल्सो। आप इस तरह करें ना, ये जो सारे इंटीरियर डिजाइन वाले हैं, ये सारे के सारे जरूर अपना इंटरेस्ट जरूर इसमें मेंशन करें, बिकॉज जैसे जैसे फैशन डिजाइन की क्लास अपने एंड को पहुंचेगी, उसके बाद द होल थिंग वुड बी ट्रांसलेटेड इनटू द इंटीरियर डिजाइन। इंटीरियर डिजाइन वुड बी ऑल टुगेदर बिल्कुल सारा एक बिल्कुल न्यू टॉपिक होगा, और उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। रिगार्डलेस आप फैशन डिजाइनर है या नहीं है, घर तो आपका है ना, उस घर के लिए आपने अगर कुछ भी सोचना है, so you must have to have the interior design sense inside yourself, जो आपसे ये सारे के सारे काम करवाए। आयशा ताहिर, महानूर रिजवान, निदा उमर। Now we have 3 participants who have the interest. Okay, Zainal and is the 4th one, जिनका इंटीरियर डिजाइन में भी इंटरेस्ट है, and Maimuna Nawal also. Very right. As well as in the fashion design. Very right. देखो, idea is this कि जो नॉलेज मेरे पास है ना, वो नॉलेज मैं आप लोगों तक ट्रांसलेट करूं। दैट इज व्हाई इंटेंशनली आई टुक अप दिस होल थिंग एज अ चैलेंज, कि मैं दोनों टॉपिक्स को भी साथ साथ रखूंगा, एंड इंशाल्लाह दोनों चीजें आप लोगों को टीच करूंगा जहां तक मुझसे हो सका। राइट, सो बी रेडी फॉर दिस। इंशाल्लाह आने वाले कुछ सेशंस में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग फैशन डिजाइन एज वेल एज द इंटीरियर डिजाइन, लेकिन बाय यूजिंग कंप्यूटर्स, वो इंशाल्लाह करेंगे। सो कल कुछ टॉपिक्स हम और इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर्स को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद दोबारा यही डिस्कशन। सो बी रेडी, अवेलेबल टुमारो, एंड इंशाल्लाह सी यू देन। अल्लाह हाफिज, सी यू टुमारो, बाय बाय।